Hi guys, welcome to CET Mentors. My name is Ketan. So today we're going to talk about close test being one of the important area of your verbal, wherein you can see round about like 10 questions coming from this one segment itself. Now this is my handout. This is what we did yesterday. It's a verbal workshop which is only for the close test. Now let's understand a couple of things that how do you actually approach to this. So in this video I will talk to you guys about how do you understand the LOD, what should be your approach, and a couple of new patterns that I can see coming in the close test. Now look at this first paragraph. It talks about economics, and this is it. Like either you check the paragraph, like you say that okay, the paragraph is all about economics, and this is something like I kind of know it because I'm a BCom guy, or let's say whatever, BMS. So I'm gonna jump into it. So should not be doing that. Close test should always be started with your options, because even if you're somebody who is a non-commerce, or let's say you are an engineer or pharma guy, right? You really don't care whether your close test is based on economics, or it is based on, let's say, science, or any other subject for that matter. What happens is basically your options would matter a lot, because ultimately the game is going to be on the options, right? So even if you do not understand your passage a lot, just by reading it nicely, you can actually understand what options can be fit into it. As simple as that. Now there is a strategy, by the way, that how you do it basically. So anyway, so like with that strategy, you will be able to kind of help. It helps you to kind of get like round about like 100% accuracy, even if you do not know the topic. So this is what the basic close test would look like. A very simple one, the basic one, where you have this. Look at the another one. Look at the options over here. These options are damn easy. All these options, these are really easy. So just by looking at the option, you will be able to understand that yes, I will be able to do this, and you can kind of pick it up. The 10 marks in pocket, right? So this is nothing hard and fast, nothing out of the world as such. By the way, in this particular set, the language is little bit tough. It's not that fluent, or it's not that easily understood. But the options have actually made this entire thing really simple. So this is what you kind of talk about the basic level. So this is my basic level. Actually here is a little error. So this is my basic level actually of my workshop. I'll kind of take you through the advanced level and challenger level now. So if you look at, this is the advanced level that we have. So this is the advanced level that we have. Now what makes it advanced? Now you look at this demonetization passage, right? Now people get really happy. Okay, I've got demonetization passage, and this is something I really know. I've studied this in GDP and all that stuff. But look at the options. So this is little bit of new pattern as far as close test is concerned. Find the appropriate word for blank one. So what you got in here is you've got this blank one out here, right? And for this blank one, you need to find out the proper word. So this is not the vocabulary. This is basically a sentence that is given to you, right? So assiduous for the economy, multifarious, reprived, imposed, injected, all that stuff. Trust me, these options are not that easy, because there are other options also. Like when you talk about prurient, right? Puerile, right? All these are like vocabulary kind of heavy stuff, right? So this is where you understand that okay, fine, I think the passage is okay. मतलब passage है demonetization पे. Demon क्या होता है मुझे भी पता है, but यार जब मैं इसके options देखता हूँ तो options थोड़े से है खतरनाक. So what happens? It consumes your time, right? ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते. It consumes your time. It kind of puts a break to your speed. And this is what you need to understand कि अच्छा इसको मैं कब पिकअप करूँगा, पहला 1 घंटा, बाद वाला 1 घंटा, या एंड में, राइट? मैं इसको शॉर्ट करूँगा या नहीं करूँगा. That's the call that you have to take on the D-day, right? So this is the way your close test का LOD difficulty level will change. Just by looking at demonetization, you should not be putting your hands into it, because बाद में problem होगा पक्का. But yeah, definitely यहाँ पे थोड़ा सा strategy लगा के you can still crack this in 5 minutes, the way we did in our workshop yesterday. So yeah, this is little bit of advanced level. Now if you move ahead, there is a new pattern. There are only 5 questions. इसमें थोड़ा सा चेंज है. इसमें देखो क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे किया है. इसमें वो कह रहे हैं द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट अप्रोप्रिएट इन द सेंटेंस वन, राइट? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर पैसेज. यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे ये वर्ड्स वापस रिपीट हुए हैं. तो दे आर सेइंग दैट आपको ये फाइंड आउट करना है विच वर्ड इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज न्यू. तो यहाँ पे यू आर नॉट फिलिंग द ब्लैंक. यहाँ पे यू आर नॉट एक्चुअली फिलिंग द ब्लैंक, बट यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू
change the word और यहाँ पे you are trying to replace the word with the correct one. Now this is something a typical thing that you will be able to see in CET. I mean जितने भी पैटर्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये डेफिनेटली आप CET में देख सकते हो. So this is what it is. Now look at this, just a clue, just a strategy. जब ये सेट की बात आती है, right, this set ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, what is it all about? Safeguard this water and all that stuff. Trust me, ये जो सेट है, we did this set yesterday in 3 to 4 minutes. And mind you, we read only 20% of this entire passage. And we marked all around about 80% questions हमने mark करे with 100% accuracy. That's not a strategy. So you have to go step by step. ऐसा नहीं कि बस आपको solve करना है इसलिए मैं कहता हूँ you need to kind of solve 40 to 50 questions nicely with a proper analytical approach. तब जाके ये एक idea बनती है कि करना कैसे. अब मगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी थोड़ा सा नया पैटर्न है जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड ऑल दैट स्टफ. बट ट्रस्ट मी, जस्ट बाय लुकिंग एट इट देयर इज अ वे टू सॉल्व इट, यू कैन डू इट. बट ये आता है, ये बैंक पीओ का भी फेवरेट है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर एडवांस लेवल. दिस इज गोइंग टू बी एडवांस लेवल एंड द डीमोन वाला पैराग्राफ वाज योर एडवांस लेवल. एक्चुअली चैलेंजर लेवल अभी आपको मैं दिखाऊं. नाउ ये देखो, ये सबसे खतरनाक पैसेज है. अब इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें है डबल चीज़ें. ठीक है, एक तो आपको ये नंबर 1 दिया है, फिर आपको ये ए फॉर एप्पल है जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है. अब इसका LOD कैसे बढ़ता है, राइट? क्या ना द क्वेश्चन इज, क्या ये पैसेज रियली टफ है? द आंसर इज नो. पैसेज इज ईजी. इज इट डुएबल? यस, इट्स डुएबल. द क्वेश्चन इज कितने टाइम में ये डुएबल है, राइट? एंड इफ यू लुक एट दिस एंटायर सेगमेंट, व्हाट मेक्स इट टफ? अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है क्वेश्चन 1. अब ये कह रहे हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया है वहाँ पे इन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं वहाँ पे कुछ एरर है. नाउ वी हैव टू डू दी सेंटेंस करेक्शन. तो यहाँ पे बन गया आपका ग्रामर. ठीक है, मतलब क्लोज टेस्ट में इन लोगों ने ग्रामर डाल दिया. अभी यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है. आपको एक तो वो जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करना है. नाउ कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको यहाँ से निकालना है. दैट्स नंबर 1. Now how do they make it even more tough? Now this is something can be expected in your CET अगर आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है तो. अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपका जो सेकंड सेगमेंट जो है, यहाँ पे आपका जो सेकंड सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट में आपको क्या करना है, ये वाले सेकंड सेगमेंट में आपको करना है फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ वर्ड आउट ऑफ दीज वर्ड्स. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं, आउट ऑफ दीज वर्ड्स विच आर गिवन आउट हियर, out of these words you need to find out a proper word which can be put in A में, right? जो A का fill in the blank हो सकता है, right? उसके बाद वो सेम वर्ड आपको इन दोनों blanks में भी fill करना है. मतलब वो वर्ड यहाँ पे भी बैठे A वाला में, that's number 1. वो वर्ड यहाँ पे भी बैठे and वो वर्ड बाद में यहाँ पे भी बैठे. It means you have to fill in 3 blanks with one single word. That's where it gets really really difficult and that's where it gets on your nerves. फिर और एक नया पैटर्न है जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि यू हैव टू रिप्लेस, फाइंड द 2 वर्ड्स. सो पोजिशन ऑफ द 2 वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट एंड नीड टू बी एक्सचेंज. सो यहाँ पे इन लोगों ने आपको दिया है मैच द फॉलोइंग. सो दैट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो 2 वर्ड्स है थर्ड सेगमेंट में, ऐसे 2 वर्ड्स है जहाँ जिसका पोजिशन सही नहीं है, सही भी होगा गलत भी होगा. यू नीड टू फाइंड आउट कि कैसे रिप्लेसमेंट होगी. सो यू जस्ट नीड टू चेंज देयर प्लेसेस. सो दिस इज वॉट मेक्स योर एंटायर क्लोज टेस्ट रियली रियली टफ गेम. तो ये जो मैंने पैटर्न आपको दिखाए, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा तो इसी एक पैटर्न में से आएगा, जो ओल्ड पैटर्न है और जो न्यू पैटर्न है. बट दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर एवरी सिंगल टॉपिक you need to have a strategy that when are you going to pick it up, how much time you're going to be spending on it. And time, I think time is nothing but a function of your shortcuts, to be very honest, and most importantly your strategy. If you know strategy and if you know shortcuts, you'll be able to crack them in less than 5 minutes. नाउ ये जो आपको मैंने कहा, ये पैसेज जो चैलेंजर लेवल है, चाहे C2C मेंटर्स में हम ये चैलेंजर लेवल में कराते हैं, दिस कैन स्टिल बी नॉक्ड ऑफ इन 6 to 7 minutes. I mean it's not a bad deal यार. 6 से 7 मिनट में अगर मुझे 10 क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी 100% एक्यूरेसी पे, then this is a great deal. And trust me, if you are somebody who is on 130 or who is on 135, आपका ऑलरेडी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुका है. तो इफ यू आर ट्राइंग फॉर JBIMS, ये पैसेज आपको लेना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आपका स्कोर बनेगा. प्लस टेक विल बी 145 फॉर यू. यू गेट इट माय पॉइंट? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन से आपको आगे लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी जनता गिव अप करेगी. सो दैट्स वेयर यू विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स, सो दैट यू विल बी पुश्ड अहेड विद 145 150. बिकॉज 150 तक मैक्सिमम जनता नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं, और अगर उनको करना होगा तो उनको ऐसे वाले क्वेश्चन से गुजरना होगा.
That's where if you are somebody who can knock off 130, 135 at a very early stage in the CET, and then you can pick these questions up, score well, and you will be able to cross 140, 145 or 150 plus. Right, so this is going to be the strategy. So I hope this helps you. Right, go through this and build your strategies for close test. One of the most important area of CET, 10 marks sure shot. So guys, that's it from my side, and thank you so much for watching this video.